So, unit number 4 is about government and the macroeconomy. Macroeconomy versus microeconomy. Micro was consumer के behaviors, producers के behavior, labor का behavior which we studied, and market structures वगैरह वगैरह. जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये नेशनल इश्यूज़ का डिस्कशन होता है, और उसमें हम पहली चीज़ जो तुम्हारे इसके अंदर हमें डिस्कस करनी है, इट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है? देखो, जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, एक तरफ तो हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट का एक रोल है एज अ प्रोड्यूसर. राइट, गवर्नमेंट रोल एज ए प्रोड्यूसर. तो गवर्नमेंट एज अ रोल ऑफ प्रोड्यूसर ऐसा क्या बना रही है? व्हाट इज द गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड इन? तो हम बोलते हैं गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स लाइक essential goods and services. Okay, अभी किस तरह की essential goods and services? Well, we're talking about, for example, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया. ओके, जिसको हम बेसिकली मेरिट गुड्स भी बोल सकते हैं. ओके, उसके अलावा गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ये भी हो सकती है टू सप्लाई पब्लिक गुड्स. और पब्लिक गुड्स के अंदर हमने बात की थी जिस तरह से यू नो हाउ वी हैड दीज स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स कह लेते हैं उसको, स्ट्रीट लाइट्स, डिफेंस, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये गुड्स भी बनाती हैं. तो गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर ये भी हो गया. एक ऑप्शन हम ये भी बोल सकते हैं टू कंट्रोल नेचुरल मोनोपोलीज. मोनोपोलीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो एक सिंगल सेलर होता है किसी सर्टेन प्रोडक्ट का. सो नेचुरल मोनोपोलीज के अंदर हम यूजुअली हम बात करते हैं एग्जांपल लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी. ये नेचुरल मोनोपोलीज हैं. सो इन पॉइंट नंबर सी वी से टू कंट्रोल नेचुरल मोनोपोलीज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. द रीज़न वाई इसको हम नेचुरल मोनोपोली कह रहे हैं एंड द गवर्नमेंट शुड कंट्रोल इट इज़ बिकॉज कि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं. किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दो तो दे कैन मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स ऑन दिस. तो इसी वजह से वी से कि यू नो व्हाट, द गवर्नमेंट शुड टेक कंट्रोल ऑफ दिस. इस तरह से कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे सऊदी अरब के अंदर ऑयल जो है वो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है बिकॉज इट्स वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज जो रेवेन्यू जनरेट करती है. तो दैट हेल्प्स गवर्नमेंट विद अ लॉट ऑफ मनी एंड देन वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं पैसे को. द सेकेंड रोल गवर्नमेंट कैन प्ले इज government as employer. Governments as employers, because sometimes governments in all countries, in fact, government एक बहुत ही major employer होती है. They hire people to work as civil servants, जिसके अंदर you can have like tax collectors, you have accountants, you have like passport checkers and नादरा के ऑफिस के ऊपर. एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर कैरिंग आउट ऑफिस वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, सो we'll write the government
is a major employer in all countries, some work directly for government as civil servants. Example, you have tax collector or like passport checker, or they carry out office work on behalf of the government. For example, it could be that, like, for example, they might, produce research for governments, etc. So it can be a private enterprise जिनका काम है इकोनॉमिक रिसर्च वगैरह करना. गवर्नमेंट माइट नॉट हैव द एक्सपर्टीज, तो गवर्नमेंट इन प्राइवेट सेक्टर्स के साथ they can ask them to do certain research for them. अक्सर जगहों के ऊपर we've seen कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर कैन डेवलप वेपन्स, और आपकी जो गवर्नमेंट है बेसिकली उस प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के the private sector can work on behalf of the government to produce some of those technologies and things like that. ठीक है, तो एक तरफ तो ये हो गया. फिर दूसरी तरफ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ कुछ हो सकते हैं जो पब्लिक सर्विसेज भी में भी हो सकते हैं. पब्लिक सर्विस employees such as people in education and healthcare, उसमें भी लोग हो सकते हैं which can be helping. You can even talk about those people who are working for public corporations. Government acts as employer in public corporations. Back in the day, we used to actually do this entire chapter. Just maybe we would talk about public corporations and stuff. In just simple words, is basically the state-run businesses. जैसे आपके पास PSO है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, दैट्स अ स्टेट-रन बिजनेस. तो गवर्नमेंट रन करती है, तो उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो भी एक तरीके के गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ही हो जाते हैं. अब ये वाले जो लोग होते हैं, गवर्नमेंट एज एन एम्प्लॉयर ऑब्वियसली लोगों को एम्प्लॉय भी करता है, बट साथ में ज़्यादातर बहुत सारे लोगों को बहुत शौक है गवर्नमेंट के लिए काम करने का. वन ऑफ द रीज़न वाई दे वांट टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट इज़ दैट गवर्नमेंट जॉब्स आर मोर सिक्योर, आर मोर secure, and they offer many fringe benefits.
The third role of the government is manages the economy. So when we're talking about it manages the economy, obviously it has certain they develop policies to set the economy's direction. Okay, and the key thing here is they have certain macroeconomic objectives. Okay, they have macroeconomic objectives and they want to achieve those, right? Such as, let's talk about this because our next element is actually our discussion on the government objectives. So let's just mention it right now कि government के macroeconomic objectives में क्या क्या आता है. एक first and the foremost important one is, we say the government's macroeconomic objective is to have a sustainable economic growth. Sustainable means long lasting, not just short period of time, but generation to generation it should sustain itself, it should grow in a positive direction. And another objective is that the government wants price stability. ये हो गए तुम्हारे top two. They don't want the prices to rise too fast or even fall. They want it to rise but at a slower rate. That means inflation का discussion होगा. I'm just saying this word right now, inflation, but prices of goods and services for now. They also want full employment to happen. Full employment, or they want very low unemployment. Low unemployment. Number 4 factor that we can talk about, fourth macroeconomic objective that the government wants is they want equal distribution of income. Distribution of income. This is a very subjective idea, but at least it's about somehow we want to reduce inequality and poverty. And how do you do that? Well, we make it fair कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है ये ना हो कि रिच को बहुत ज़्यादा चला जाए और गरीब को बहुत कम जाए और मिडिल इनकम बिल्कुल बीच में डिस्ट्रॉय हो जाए. You don't want rich to get too rich, you don't want poor to get too poor, you want a good healthy middle income वाले लोग. And lastly, you want a stable balance of payment. This is one of the major ones. तो ये तुम्हारी टॉप 5 मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो गवर्नमेंट मैनेज करना चाहती है in order to make sure that economy is functioning appropriately. तो ये गवर्नमेंट का obviously we can say this is like the third role, setting up policies.